Welcome back, friends. So we are about to commence a new week beginning December 18, Monday, and the markets remain bullish, in a bullish mode, cheerful mode. The DIIs remain as net buyers for the 21st consecutive week, and they have been supporting the markets regularly in India. The FIIs have turned net buyers in the cash segment ahead of the Christmas holidays. However, they remain to be net sellers in the derivatives segment. So that is something which continues from their point of view. The US Federal Reserve this week has continued its pause on the rate hike campaign, but it has signaled a series of rate cuts possibly coming in soon. They have, however, not indicated a time period within which they would like to have the rate cuts in operation. Crude oil has gone back up after 2 months on the back of bullish forecast by the International Energy Agency, or IEA as it is popularly called, on the demand for oil next year and a weaker dollar to support. Now, RBI can also take some cues from the US Federal Reserve and reduce the interest rates. They can do that in their next monetary meeting. However, there is two pieces of data which are acting as a dampener, the WPI and the CPI. On the domestic front, the CPI has gone to a 16-month high of 11.7% in October 2023, aided by the festive season and a rather low base to begin with. WPI, on the other hand, has risen to an 8-month high of 0.26%. In November 2023, it is driven by a sharp rise in food prices, especially onion and vegetables. I hope your eyes are not tearful with the rising onion prices, and I hope they will come under control soon. So CPI and WPI on the domestic front still continues to be on the rise. Nifty, on the other hand, continues to be, people say that, sir, show us some technicals also. So yes, it is above its 50-day moving average, 100-day SMA and 200-day SMA. Okay, we use technicals, maybe 3-4% of our algorithms, but I want to make some technical people happy as well. All right, so for them, Nifty above its 50-day SMA, 100-day SMA and 200-day SMA. So now I hope technical people are also happy. So these positive technical conditions can lead to good amount of buying support. All right. So people are watching their screens. Everybody is seeing it's above the 50-day, 100-day, 200-day. One rally feeds into another, another into yet another. All right. However, Stochastic and RSI are both placed in the overbought territory on a daily and weekly charts. And this could indicate regular bouts of profit booking and selling pressure, especially at higher levels. Some of it you may see this week as well. So overall, the market continues to be bullish, and yes, we are headed towards higher levels. In fact, all the targets that I have been giving in my groups have been achieved in hardly a few hours. So we have crossed everything. I wouldn't be surprised to see higher targets. We are definitely going over 21,500. But yes, there will be occasional bouts of profit booking. And for those in the FNO market, if you are not careful, you could be caught sleeping. So be very cautious. Markets in India would continue to take cues from the global markets news flow, particularly the US bond yields and dollar index, crude oil prices, news flow on the Middle East tensions, okay, how much that has been resolved, inflation and the rupee dollar exchange rate. Okay. So rupee dollar exchange rate has been a little stable, however, this last week. On the back of course, as you know, the US Federal Reserve indicating that there could be now some rate deductions that may come in next week. All right. So all that is good.
and people are happy on that front. However, be careful. Regular bouts of profit booking could come in on account of the rather high RSI level. All right, some of it, as I said, this week. But yes, overall remains bullish. Nifty is headed towards 21,600 levels as far as we can see. Yet be careful when the fall comes. It can be sudden, catch you by surprise and catch you sleeping. We should start on a decent note on Monday. And yes, where we go from here, do join our premium or premium plus groups where we give you in premium we give you 3 days predictions in advance. In premium plus we give you 2 weeks predictions in advance. And of course, those who just want 1 week in advance, then we have the premium value. You can join that as well. And after all, we still have the election special package, just daily predictions, very moderately priced. For all this, you can contact us by WhatsApping us on 9820861044. भाई और बहनों, खूबसूरत शुरुआत तो दिख ही रही है. निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है. 50 डे SMA, 100 डे SMA और 200 डे SMA सब ऊपर की तरफ अच्छी तरह से मार्केट इनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस वक्त. तो अच्छा सा और आगे बढ़त आने की संभावना. लेकिन स्टोकेस्टिक और RSI इस वक्त जो हैं वो ओवरबॉट टेरिटरी दिखा रहा है और इसके लिए टाइम टू टाइम कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना भी है. कुछ इस हफ्ते में भी दिखाई दे सकती है थोड़ी सी. ठीक है, ऑन द होल ट्रेंड ऊपर है. 21,600 को क्रॉस करना चाहिए और ऊपर के भी मैं टारगेट्स आगे के दे रहा हूं जल्दी से. DIs और अभी नेट बायर्स हैं 21 कॉन्जिक्यूटिव हफ्तों से बाय कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को. FIIs भी अभी बाय किए इस हफ्ते में कैश सेगमेंट में, वहां पे नेट बायर्स हो गए. लेकिन अभी भी वो नेट सेलर्स हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में. ठीक है, क्रूड ऑयल एक हफ्ता पहले, 2 हफ्तों के बाद, 2 महीनों के बाद अब वो भी थोड़ी बढ़त दिखा रहा है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने सिग्निफाई किया है कि अब थोड़ा सा ऑयल के ऊपर डिमांड बढ़ने की संभावना है और कमजोर डॉलर की वजह से भी. WPI, CPI थोड़ा सा अभी नियंत्रण में नहीं है भारत में. इसके लिए RBI को तुरंत ब्याज दर घटाने में कुछ तकलीफ आ सकती है. CPI भी 11.7% ऊपर अक्टूबर में आया. WPI 8 मंथ हाई 0.26% आए नवंबर में और शार्प राइज हुआ है कांदे की कीमत में और भाजियों की कीमत में. तो मुझे लगता है कि आपके आंखों में आंसू आ गए. कांदे का दाम बढ़ते हुए सुनाई देते, लेकिन उम्मीद करता हूं कि मोदी साहब और उनकी गवर्नमेंट उसको भी जरूर जल्दी से कंट्रोल कर देंगे. और आप संभाल के तो करेंगे ही ट्रेडिंग, क्योंकि हाई लेवल्स हैं, RSI ओवरबॉट है. लेकिन फिर भी ट्रेंड ऊपर की तरफ है इस वक्त मार्केट का. मार्केट अब भी अमेरिका के बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल प्राइस वगैरह को देखते रहेगी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस को ना भूलिएगा. लेकिन फिर भी इन सब को कुल मुल के तोल मोल के अगर देखा जाए, बुलिश ट्रेंड अभी भी है. और आप सिर्फ बीच बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग उसको संभालिए इसलिए कि अगर आप FNO में हैं, वो रॉन्ग टाइम पे आ गया तो आपका प्रीमियम बहुत ही खिसक जाएगा, याद रखिएगा. ठीक है, और एट द सेम टाइम वो राइट टाइम पे अगर आप अपने पुट लेके बैठे तो उसके लाभ भी हो जाएगा. इस तरह से हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को इस हफ्ते में देख रहे हैं. और ज्यादा अगर जाना है तो ज्वाइन करिए प्रीमियम, जो कि 3 दिन एडवांस में प्रेडिक्शन दे रहे हैं. प्रीमियम प्लस आपको 2 हफ्ते का दे रहा है एडवांस में. प्रीमियम वैल्यू 1 हफ्ते का एडवांस में है. 3 है पैकेज. और डेली प्रेडिक्शंस के लिए इलेक्शन स्पेशल पैकेज. संपर्क करने का नंबर सभी का वही 9820861044. नमस्ते, जय हिंद.